Hi everyone, this is Javid. Hope you're doing well. So in this video, we are going to talk about PHP programming. We're going to building a basic calculator. हम एक basic सा calculator build up करेंगे जिसमें हम अभी के लिए तो मैं सिर्फ आपको एक addition show कराऊंगा. So let's begin. Okay. So यहाँ पे मैंने अपना atom open कर लिया है. Okay. So मैंने यहाँ पे अपने पास atom software open कर लिया है, text editor. So let's do it. सबसे पहले form action, then site.php, method get. Okay. Then input type number, then name n1, which is number one, br, then input type number, then name and 2, then input type submit. So then after submit, we're gonna add the tag of form. हम यहाँ पे form का tag end करते हैं. So इसे सेव करते हैं. Then command prompt open करते हैं. Command prompt open करने के बाद php dash local host 8000. Okay, तो local host start हो गया. यहाँ पे हम Chrome open करते हैं. उसके बाद local host site.php. So यहाँ पे हमारे पास जो boxes हैं वो आ गए हैं. Then उसके बाद हम यहाँ पर PHP यूज करेंगे. PHP command, then echo dollar underscore get n1 means number one plus dollar underscore get and 2 means number 2. Then हम इसे सेव करते हैं. Back to site, refresh. यहाँ पे हमारे पास एक error है. Let's see the error. So let me see the error. So the error is, as I think, so the error is that we didn't use quotation marks. Okay, so then save it. Localhost site.php.
अभी यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं रैंडम नंबर है, मीन्स यहाँ पे 22 and n2 equals to 23, 25। सो यहाँ पे पूरी 21, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहाँ पर n1 equals to 22 है। वेट, ओके, सो अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे n1 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 22 आ रही है, एंड n2 की 23 आ रही है। तो 23 प्लस 20, सो दिस इज ऑल। देन अगर हमें इसको थोड़ा और प्रोफेशनल करना है, कंट्रोल एस, बैक ऑन द साइट, आंसर 45। अब मैं इसमें कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, अगर मीन्स लुक एट दिस। सो बेसिकली अब मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो फॉर्म, एक्शन, एक्शन मीन्स कहाँ पे वर्क करना है, क्या वर्क करना है, कहाँ वर्क करना है, कहाँ एक्शन लेना है, साइट डॉट पी एच पी, एंड form action site.php, site.php this site. Then method is get, then input type is number, and name of the number is n1, means our column 1 which is n1। then हम उसके बाद अगर हम देखते हैं number name n2, okay, this is our second number। then अगर हम देखते हैं आगे तो input type submit, okay, then when do you write answer, okay। एक बात और मैं बता दूं कि जब भी हम PHP की कमांड यूज करेंगे तो हम फॉर्म का टैग क्लोज कर देंगे। PHP की कमांड कभी भी फॉर्म के टैग में हम यूज नहीं कर सकते। सो गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। एंड बेसिकली इस वीडियो में मैंने ये इसके बारे में नहीं बताया, बिकॉज लास्ट वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ। सो लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में एक ओवरव्यू दे दिया। So hope you like my video. Do subscribe Omni Academy. Omni Academy is the best e-learning platform for you. Thank you so much.